एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड द गैप। आई एम जयति और आज के वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से और इमिग्रेंट स्ट्रगल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कल्चर शॉक के बारे में एंड उसी की कंटिन्यूएशन है आज की वीडियो वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट सम मोर स्ट्रगल्स दैट इमिग्रेंट्स गो थ्रू, व्हिच इज नंबर 1 होम सिकनेस, नंबर 2 जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं हम एज इमिग्रेंट्स व्हेन वी मूव टू कैनेडा, एंड थर्ड दिस प्रेशर टू प्रूव आवरसेल्व्स एज इमिग्रेंट्स। सो आज की वीडियो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशनल होने वाली है, थोड़ी सी डीप होने वाली है, बट आई होप दैट यू एंजॉय द वीडियो एंड यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी ऑफ कोर्स लिटरली तो हमें पता है कि हमें होम सिकनेस इसलिए फील होती है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ फेमिलियरिटी व्हेन वी मूव टू कनाडा, और एक लैक ऑफ सोशल सपोर्ट फील होता है जब हम मूव करते हैं। बट आई फील कि थोड़े डीपर रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमें होम सिकनेस फील होती है। एंड एज समबडी हु इज एन इमिग्रेंट माई सेल्फ, एज समबडी हु हैज स्पोकन इन द थेरेपी रूम इन डेप्थ अबाउट issues as an immigrant, I feel that I really want to share these deeper issues, this lack of confidence, this pressure to prove ourselves that we carry as immigrants. I think एक चीज जो हर immigrant at some point go through करता है is कि जब हम यहाँ मूव करते हैं तो हमारे यहाँ पे पैर जमे नहीं होते कनाडा में, सो कनाडा डजंट फील लाइक होम। एंड जब हम मूव करते हैं तो जो लोग हैं बैक होम, आर फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी, उनके साथ भी एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और इस गैप का रीज़न ये होता है कि हम इमिग्रेंट बनकर कनाडा में आकर इतने बिजी हो जाते हैं, वी कीप कैचिंग अप। हमेशा ही लग रहा होता है कि हम पीछे रह जाएंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे, ओवरवर्क नहीं करेंगे। सो वी आर सो बिजी बिल्डिंग आवर लाइव्स हियर दैट द पीपल हु आर बैक इन योर होम, the people who you used to fall back on for social support back in your home country, they're not witnessing the changing pace of your life when you are so far away in Canada. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमको ये भी लगता है हमारे कल्चर में कि अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हम इतनी स्ट्रगल हो रही है या फीलिंग होम सिक या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है या वी आर रियली स्ट्रगलिंग एज इमिग्रेंट्स, तो उनको टेंशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम डिस्कस नहीं करते, तो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा और बढ़ जाता है, तो घर से डिटैच्ड फील होने लगता है और कनाडा अभी घर बना नहीं है। और इस टाइम पे होम सिक फील होना शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि घर पे होते तो कोई प्रॉब्लम्स ना होती, वहाँ पर अलग तरह के स्ट्रगल्स होते अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है। बट हम मिस क्या कर रहे होते हैं, एक कंसिस्टेंसी, एक फेमिलियरिटी, एक सर्टेनिटी जो एज एन इमिग्रेंट डिसरप्ट हो जाती है जब हम मूव करते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कंसिस्टेंसी और फेमिलियरिटी या सर्टेनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड और जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड जो कल्चर शॉक है जो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, बट ऑल्सो इनसाइड। इंटरनली एज इमिग्रेंट्स वी आर चेंजिंग सो मच, हमारी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो रही होती है, इमोशंस इतने अप डाउन हो रहे होते हैं, वी आर रियली चेंजिंग एज पीपल when we move countries by ourselves trying to make our life here in Canada. And कई बार वो जो changes हम experience कर रहे होते हैं अपने अंदर, they don't make sense to us, और उसकी वजह से हमारा confidence हिलने लगता है। तो बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं, अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, सो व्हाट डू वी रिलाई ऑन? एक और जो चीज़ है विच इज़ सो सिग्निफिकेंट टू लुक एट इज, जब हम यहाँ पे मूव करते हैं कनाडा, हमारे पास एकदम से इतना ज़्यादा टाइम होता है अपने लिए that we start contemplating our life all at once. हम एकदम से इतनी uncomfortable situation में enter कर जाते हैं। तो कई बार when people start therapy, when they move countries, बहुत बड़ा जो issue होता है वो ये होता है कि I don't understand why I start crying uncontrollably, या मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा mood एकदम से लो हो जाता है, एक समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, या वी स्टार्ट फीलिंग अनश्योर अबाउट आवरसेल्व्स। और उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट वी स्टार्ट ओवरवर्किंग, जैसे अपने आप को प्रूव करना है कुछ, बिकॉज किसी और ने तो बोला नहीं था कनाडा जाने को, इट वाज आवर ओन डिसीजन, राइट? यू कांट इवन कंप्लेन। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी स्टार्ट ओवरवर्किंग, स्टार्ट प्रूविंग इट टू आवरसेल्व्स दैट वी आर वर्थ इट, दैट वी विल फाइंड अ जॉब, हम हासिल करेंगे, एंड व्हाट हैपेंस, वी रीच अ बर्नआउट।
इतना प्रेशर होता है सक्सीड करने का, क्योंकि ये प्रीकंसीव्ड नोशन होता है हमारे अंदर या हमारे आसपास के लोगों में, यू नो पीपल बैक होम, कि अब्रॉड गए हैं तो लाइफ तो अच्छी होगी, डॉलर्स में कमा रहे हैं तो अच्छा ही कमा रहे होंगे, या कनाडा चले गए तो सक्सेसफुल ही होंगे या हो ही जाएंगे सक्सेसफुल। तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि उसका कितना प्रेशर लेके वी स्टार्ट ओवरवर्किंग, वी स्टार्ट बर्निंग आवरसेल्व्स आउट टू नो एंड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन लाइफ। जब मैं मूव करी थी कनाडा, इट वाज इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, एंड मैं आई वाज वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट बैक इन इंडिया एज वेल, राइट, बट ऑनलाइन सेशंस ही हो रहे थे, एंड व्हेन आई मूव्ड आई कंटिन्यूड दैट सेम वर्क हियर एज well. Online work with the same set of people who I was working with back in India, just that country change हुई थी. And when I moved and I started working, I slowly realized that I started questioning myself as a therapist. I didn't know what I was offering in the session. I started questioning if I was making sense in the room, in the therapy room. कुछ भी change नहीं हुआ था. My work was just as it is. The people who I was working with, वो change नहीं हुआ था, इधर मतलब ज़्यादा change नहीं हुआ था. Just the only thing that changed was that I moved countries. एंड आई स्लोली रियलाइज्ड कि जो मुझे अनश्योरिटी, जो मुझे कॉन्फिडेंस, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आउटसाइड द थेरेपी रूम एज अ न्यू इमिग्रेंट फील हो रहा था कनाडा में, वो मेरे थेरेपी रूम में भी ट्रिकल डाउन होने लग गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अनश्योर अबाउट माई प्रोफेशन. सी, मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट बात करती हूँ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग टू समबडी अबाउट वॉट यू आर गोइंग थ्रू और राइटिंग अ जर्नल, एंड आई रियली कांट रिकमेंड दैट इनफ. Everybody needs a life story. Everybody needs a good story for themselves that they can tell to the world, that they can tell other people. हमारी life story, हमारी personality किन चीज़ों से बनी होती है? All the things that are either familiar, that we connect to, that we give meaning to. हम अपने experiences को कोई meaning देते हैं, कोई emotions attach करते हैं, उनसे connections form करते हैं, and that makes our life story. That gives us confidence, that gives us our identity. और जब हम मूव करते हैं कंट्रीज, तो ये जो एक पर्सनल स्टोरी होती है वो एकदम से अब्रप्टली चेंज हो जाती है. हमारी लाइफ लिटरली बिफोर कनाडा एंड आफ्टर कनाडा में डिवाइड हो जाती है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट डजंट मेक सेंस. The changes that we are going through internally, the changes that we are looking at externally, and a lot of times we are not able to give language to our experiences. और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस प्लमेट होता है, उसकी वजह से हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, उसकी वजह से हमें एकदम से होमसिक फील होने लगता है, बिकॉज वी वांट टू गो बैक टू दैट टाइम इन आवर लाइव्स व्हेन वी वर सो कंफर्टेबल विद आवर आइडेंटिटी. बहुत कंफ्यूजन्स फील होते हैं, बहुत इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं, बहुत अनस्टेडी फील होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ चेंज हो रहा है हमारी पर्सनैलिटी में और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चेंज हो रहा है. एंड दैट इज वाई राइटिंग, टॉकिंग अबाउट इट, whether to a friend, to a family member, making connections here, looking at videos, of immigrant stories, going to a therapist, all these things. That is why they're so, or writing a journal, something that I really, really recommend to everybody, watching this video. All of that allows us to give words, give language to this newness, this unfamiliarity. It becomes easier to accept it as part of my life, as part of my life story. और अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करना ईजी हो जाता है. And that is a very important coping tool to feel comfortable, to make yourself feel at home in the new country. मैंने अपने अंदर एक चीज़ एक्सपीरियंस करी थी when I moved here in Canada. When I would talk to people who I was comfortable with, people from my own culture, people from my family, or my friends, who are who come from the same culture as mine, who have had similar experiences as mine, I would sound very confident. I would sound like myself, how I usually am. But the moment I had to interact with somebody who was new around me, so somebody with a different accent, somebody with, say a white person, or somebody who does not share my culture, मेरी एकदम से personality change हो जाती थी, या I would suddenly feel a little bit of confusion, and I could feel that my confidence suddenly takes a hit. And I really thought about it कि ये क्यों हो रहा है, and then I realized that my identity as an Indian person, a woman in India, a psychotherapist, I'm
sure of that identity. I know of that identity. I've lived with that identity. What I've not known, what I've not lived with yet, जो स्टोरी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, जो मेरी लाइफ स्टोरी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, is how I fit into this white person's life. How do I fit in this new country, Canada, and how does this country fit into my life? मेरी वो वाली आइडेंटिटी इतनी अनश्योर है अभी, इतनी अनसर्टन है, दैट द मोमेंट आई एंटर इनटू अ सिचुएशन लाइक दैट, आई my confidence takes a hit because it's an unknown space for me. ये अगर आपको nostalgia feel हो रहा है, there's nothing wrong in it. It's very very understandable that you'll feel homesick, you'll feel nostalgic, but make use of this nostalgia if you can. Presence of familiar things makes unfamiliarity bearable. So talking back home, or watching a movie from your childhood that you enjoy, or listening to a song that reminds you of a comfortable time in your life, doing the things that you did back at home, to make yourself feel comfortable, to feel that you have some sort of consistency, or taking therapy, anything. So कभी nostalgia या homesick feel होगा तो हम we just want to sit back, watch a movie and sit in bed and just cry. And that does not mean that these are substitutes for each other. Sometimes we need multiple sources in our lives to make sense of our life story, and you can do all of these things to make yourself feel better, and it's okay. Just give yourselves time to settle in this new country and don't be hard on yourself. Feeling homesick, feeling nostalgia is absolutely understandable, or it has nothing to do with how many years you've been in a new country. It does not matter. You can be here for 10 years and still feel nostalgic, still feel homesick sometimes. It doesn't mean that you're not settling in the new country. Maybe a little bit of that, yes. But it also means that all you need is a little bit of familiarity, a little bit of consistency in your life. And that's a fair thing to ask. That's all I have for you today. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe. Please let me know what you thought of the video below in the comments. If you don't want to write in the comments below, you can also write to me on email. I'll see you next week. Till then, take care and bye-bye.